यहाँ पे बुलाएं और इनसे आला हज़रत की ज़बान पर इंग्लिश में स्पीच सुने। अफ्रीका, यूके और इस तरह के कई ममालिक के हमारे नाजरीन का भी वक्त है, तो इस मदनी मुन्ने को बुलाते हैं। यहाँ पर आइए। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? ज़ियाउद्दीन। चलेगा, आपके पास 2 मिनट हैं। आपने मुख्तसर सी तकरीर करनी है, बयान करना है इंग्लिश ज़बान में आला हज़रत की सीरत पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सय्यस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। Sayyidina Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu humbly said to the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, I shall devote all my time to the recitation of salat. Our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam replied, this is sufficient to remove your worries and your sins will be forgiven. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala. Ala Hazrat, Imam of Ahl Sunnah, reviver of Sunnah, eradicator of Bidah, scholar of Sharia, guide of Tariqah, Allama, Maulana, Al-Hajj, Al-Hafidh, Al-Qari, Al-Shah, Imam Ahmad Raza Khan Al-Rahman was born on Monday, 10 Shawwal Mukarram 1202 Hijri, 14 June 1856 at the time of Zohar Salah in Jasuri, one of the areas of Bareilly Sharif, India. The name corresponding to the year of his birth is Al-Mukhtar. His birth name is Muhammad. His grandfather called him Ahmad Raza and he became famous with the same name. Sallu ala al-Habib. Sayyid Ayyub Ali Rahmatullahi Ta'ala says that when Allah Rahmatullahi Ta'ala was a child, a teacher used to come to his house to teach him the Holy Quran. One day, while teaching, the teacher asked Allah Rahmatullahi Ta'ala again and again to utter a word from a Quranic ayah. But he Rahmatullahi Ta'ala could not utter it as teacher has him to do. The teacher would pronounce the word with a zabar, but Allah Rahmatullahi Ta'ala pronounced the same word with a zir. When Ala Hazrat's grandfather Maulana Raza Ali Khan Rahmatullahi Ta'ala noticed the situation, he called Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala closer and asked for the Holy Quran, so that the correct word could be seen. On seeing the Holy Quran, he discovered that the scribe had mistakenly written zabar in place of zir. His grandfather Rahmatullahi Ta'ala asked, Ahmad Raza, why did you not utter as your teacher did? Allah Rahmatullahi Ta'ala politely replied, I tried to utter as the teacher did, but I felt as if I did not have control over my tongue. The teacher asked Allah Rahmatullahi Ta'ala in solitude, son, be honest with me. I promise I will not tell anybody. Are you a human being or a jinn? Allah Rahmatullahi Ta'ala replied, all praise be to Allah Azza wa Jal. I am a human being. However, I have been blessed with the benevolence and bounty of Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है आपकी। इस मदनी मुन्ने के लिए सुभान अल्लाह की सदाएं भी हो। आप जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं? जी। किस दर्जे में? दर्जा सानिया। दूसरे दर्जे में। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। इनको तोहफा भी पेश करेंगे। शहबाज भाई किधर हैं? इनके लिए ताइफ भी है, लेकर आ जाए इंशाअल्लाह। हाजी अमीन के हाथों से पेश करें। हाजी अमीन भी हमारे साथ है इंशाअल्लाह। मुकाबले का इख्तिताम है, दुआ भी